Hello everyone, I am Shabana and I welcome you all to my channel Craft Blooming Hub. So today I am making a resin art piece as I promised on my previous video. So here I am and let's start. Guys, do check my previous video where I did an unboxing and review of resin molds and I shared my first experience with it also. So resin comes in two parts. Basically one is resin and the other part is hardener. And it has to be mixed in 2:1 ratio. तो यहाँ पे मैंने 3 स्पून्स रेजिन ले लिया और 1.5 स्पून हार्डनर ले लिया और इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिक्स करना पड़ता है गाइस फॉर अबाउट 2 to 4 minutes. This is a very important step, that is mixing, as it helps to reduce the air bubbles. Okay, so basically I am making a resin alphabet keyring from this mold. Again, let me tell you that I have a full unboxing and review of this mold along with few other products. Do check it out, just click on the I button and you will get the video. So I'll be making a S alphabet, which is the first letter of my name. लेकिन बाद में मैंने वो अपनी दीदी को गिफ्ट कर दिया. Anyways, तो मैं पहले रेजिन का एक लेयर मोल्ड के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी इस ड्रॉपर की हेल्प से एंड आई एम जस्ट गिविंग अ फर्स्ट लेयर ऑफ द रेजिन एंड स्प्रेडिंग इट इवनली. Now I am going to add these glitters to make the art piece more attractive and beautiful. तो बहुत ही सोच विचार के बाद मैंने ये ब्लैक और सिल्वर ग्लिटर चूज़ किया. तो आई वॉज थिंकिंग कि ये जो ब्लैक ग्लिटर है दैट आई विल बी पुटिंग ऑन द साइड्स ऑफ द लेटर एंड जो सिल्वर ग्लिटर है दैट विल बी ऑन द मिडल. I want to take a moment and request you guys, those who are watching, that please do subscribe to my channel if you have not already, and please do like and comment guys. I really want to know your feedbacks and suggestion on my video, so do comment please. Guys, I am really sorry for my voice as I am having a really bad cough, cold and fever, so please bear with it. और वीडियो लेट आने का यही रीज़न है कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सो दैट्स द रीज़न. Okay, now coming back to the process. Now I'm just mixing the glitters with the resin. After few minutes मैं resin का एक final layer दे रही हूँ, just filling the mold fully. Now just let it sit for maximum 24 hours. And it will be set completely and you are ready to use. तो मैंने एक एन अल्फाबेट भी बनाया था बाद में विथ गोल्डन ग्लिटर्स और बाद में मुझे ये एन वाला ही सबसे ज़्यादा प्यारा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा, एस और एन. डू लेट मी नो गाइज. ओके, लेट्स अनमोल्ड इट नाउ. ट्रस्ट मी गाइज, दिस स्टेप इज हेल सेटिस्फाइंग. सी, जस्ट पॉज द वीडियो एंड डू कमेंट नाउ. हाउ इज इट? हाउ इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन? हाउ इज योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर सीइंग दिस? प्लीज़ डू लेट मी नो. आप देख सकते हैं कि ये ऐसे थोड़ा सा बेंड हो रहा है क्योंकि ये अभी भी कम्प्लीटली हार्ड नहीं हुआ है. मैंने ऑलमोस्ट 12 आवर्स के बाद ही अनमोल्ड कर दिया था एंड आई विल टेल यू व्हाई कि मैंने क्यों पहले ही इसको अनमोल्ड कर दिया था. उससे पहले चेक दिस एन वाला पीस गाइस. सी, ये वाला भी इजीली बेंड हो रहा है लेकिन पूरा हार्ड होने के बाद ये ऐसा बेंड नहीं होगा. नाउ लेट मी टेल यू मैंने थोड़ा पहले ही क्यों इसको अनमोल्ड किया था. बिकॉज आई एम गोना ड्रिल इट टू इंसर्ट द आई पिन फॉर अटैचिंग द की चेन. थोड़ा सा बेंडेबल पीस में ड्रिल करना बहुत ही ईजी होता है. वैसे हार्ड होने के बाद भी ड्रिल हो सकता है लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है प्रोसेस. सो मैं यहाँ पे बहुत ही ईजीली एक होल कर लूँगी
बाय द वे ये वाला ड्रिलिंग मशीन भी मोल्डिंग प्रोडक्ट्स में ही इंक्लूडेड था, मैं यहाँ पे वही यूज़ कर रही हूँ। नाउ आई एम गोना इजीली इंसर्ट दिस आई पिन इनसाइड द लेटर्स। तो मैंने दोनों लेटर्स में ही आई पिन्स इंसर्ट कर लिया है। मैंने दोनों लेटर्स में ही ऐसे आई पिन्स इंसर्ट कर लिया है। नाउ लेट्स अटैच द की रिंग्स एंड टडा, इट्स रेडी। बट गाइज मुझे ना एलिमेंट्स ऐड करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कुछ सूना सूना सा लग रहा था, तो मैंने ना 2 क्ले हर्ट्स जो मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं और कुछ ऐसे ही रह जाते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया इस की रिंग में। एंड 2 रेजिन हार्ट भी लगा दिया। वो मैं ऐसे ही दूसरे मोल्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, तो मैंने ऐसे ही कुछ हार्ट्स बनाया विथ रेड ग्लिटर एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे अनमोल्ड करने के बाद। सो आई अटैच्ड इट ऑल टुगेदर। प्लीज़ मुझे आप लोग बताना कि ये सिंपल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था या फिर बाद में एलिमेंट्स ऐड करने के बाद ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डू लेट मी नो गाइज। एंड ऑल्सो सी दिस क्यूट एन लेटर, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। So that was the video for today guys. I hope you guys enjoyed it, and also if you wanna purchase this alphabet resin art pieces, you can comment down here or you can DM me on Instagram. So bye guys, stay safe, and I hope you guys will subscribe, like, comment and share. That means a lot. So bye for now and see you on the next video.